Trump's surprise announcement with Haley and Pompeo out of the cabinet consideration. President Draupadi Murmu has recently administered the oath of justice to Justice Sanjeev Khanna as the 51st Chief Justice of India. The swearing-in ceremony, which was held recently at Rashtrapati Bhavan on Monday, was attended by Vice President Jagdeep Dhankar, along with Prime Minister Narendra Modi and several government ministers, justices, Chief Justice of India and judges from the Supreme Court as well as the other high courts. Take a look. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws.
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। Congress leader and Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi has recently shared a personal reflection on how his time as the member of the parliament for Wayanad has fundamentally changed his approach to politics. Speaking about his experience, Gandhi has explained that unlike traditional political relationships, which are often transactional, you do this for me, I'll do this for you, quote unquote, his bond with the people of Wayanad was built on something much deeper. And that was genuine affection and trust. He confessed that before coming to Wayanad, he had never used the word, and I quote, love in the context of politics, but his interactions with the people there has transformed that perspective. Gandhi has revealed that the idea of using love as a political instrument became central during his Bharat Jodo Yatra, where he made it a point to respond with kindness and compassion even in the face of hostility. According to him, this shift in his approach from power politics to a politics of love and empathy has reshaped how he views his work and his connection with the people, emphasizing the importance of emotional and human ties in politics. You have given me too much love. സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു, അതുപോലെ കഠിനമായി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. You have long-standing problems here, like the night ban, like the man-animal conflict, deep problems, old problems that we need to work together to find a resolution for. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം, രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം, അതുപോലെയുള്ള ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നറിയാം. അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And if we work hard to strengthen the farmers here and to create opportunities in food processing, packaging for the agricultural produce, and at the same time, if we give a big push to tourism, I think you have a bright future ahead of you. So I'm confident that your issues, your main issues, medical college, night traffic ban, these main issues of your man-animal conflict, she's the most sensitive person to understand them and to work with them. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം, അതുപോലെ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വികാരത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് എന്റെ സഹോദരി. And of course, I've already said to you that Wayanad is the only constituency, not only in India, but in anywhere in the world, that has 2 members of parliament. വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ 2 പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുള്ള. You have 1 unofficial member of parliament. നിങ്ങൾക്കൊരു ഔദ്യോഗിക ജനപ്രതിനിധിയുണ്ട്. And hopefully you will have 1 official member of parliament. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഔദ്യോഗിക പാർലമെന്റ് പ്രതിനിധി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. So you will see both of us raising Wayanad's issues in parliament. You will see both of us fighting for your issues. വയനാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ഉയർത്തുന്നത് കാണും. ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വയനാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. I'd like to 5 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ വെല്ലുവിളി. That Wayanad's name should be recognizable as a tourist destination, not only in India but in the entire world. വയനാടിന്റെ പേര് ഏറ്റവും മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല. And I will help her in whatever way to.
In a significant development from Manipur, 11 militants were killed by the Central Reserve Police Force during an encounter at Letang Pokri village in the Bishnupur district. This operation took place after the CRPF, acting on intelligence inputs, engaged with a group of militants allegedly involved in insurgent activities. The militants reportedly opened fire on the security forces, leading to a fierce gunfight that lasted for several hours. This operation then ended with the death of 11 militants, though their identities and affiliations are yet to be confirmed. And this major operation is seen as a blow to insurgent groups in that region, wherein the ongoing ethnic tensions and the insurgency-related violence continue to pose significant challenges. Authorities are now closely monitoring the situation as security forces work to re-stabilize the region. In Jharkhand's Palamu, Congress National President Mallikarjun Kharge has shared his views on the upcoming state elections in Jharkhand as well as Maharashtra, particularly in relationship to Prime Minister Narendra Modi's political influence. Kharge has criticized Modi for focusing more on personal and political interests rather than addressing the concerns of the common people. And he has expressed his confidence that voters in both the states would see through these tactics and then support the Congress party, which he now believes has a strong connection with the people. Kharge has emphasized that Congress's focus on inclusive development would resonate with the electorate, leading to positive outcomes for the party in the upcoming polls. सर, प्रधानमंत्री यहाँ कैंपेन किया और लगातार कि अब एक नया नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा दिया गया। नहीं, हम बोले, मेरे भाषण में भी बोला ना, एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है, और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना और यूनिटी को खत्म करके अपना ही सिर्फ दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहले चरण का आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है, आप लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर झारखंड की बात हो रही है? हम तो देखो, हर पार्टी, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतना की उम्मीद रखता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं भी 4 मीटिंग यहाँ अटेंड किया, प्रेस भी किया, लास्ट 2 किया, ये किया, तो मुझे लग रहा है कि 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, कल आपने मैनिफेस्टो भी जारी किया महाराष्ट्र में और वहाँ भी कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ के क्या हालात है? महाराष्ट्र में भी अच्छी हालत है, सब मिल के काम कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सर, प्रधानमंत्री यहाँ कैंपेन किया और लगातार कि अब एक नया नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। Shifting focus now to India's heartland, Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini has recently paid his heartfelt tribute to Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule for their groundbreaking efforts in promoting women's education, despite facing significant societal opposition.
Speaking at a recent event, Chief Minister Saini highlighted how the Phules opened the doors of education for women and played a key role in fighting for gender equality. He then also shifted focus to Prime Minister Narendra Modi, praising him for implementing the ideology of Mahatma Jyotiba Phule on the ground. Saini noted that under Modi's leadership, initiatives to educate the girls and to empower the poor have brought real change, bringing smiles to the faces of those who are underprivileged. Concluding his remarks, CM Saini expressed his confidence that, inspired by the Phule's vision, the Bharatiya Janata Party would soon form the government in Maharashtra as well under Modi's top leadership. आज के लिए उन्होंने देश के लिए जो माता सावित्री बाई फुले प्रथम शिक्षिका के रूप में जिन्होंने यहाँ स्कूल खोल करके महिलाओं को शिक्षित किया है, उस भूमि के ऊपर आया हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले। मुझे गर्व है जो समाज से हम हैं, जिन्होंने समाज, देश को, राष्ट्र को बुराइयों से मुक्त करने का बीड़ा जिन्होंने पूरा जीवन। क्या समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है? पूरी तरह क्या समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है? क्योंकि इलेक्शंस भी हैं महाराष्ट्र में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक पिछड़े समाज से, गरीब समाज से एक ऐसे व्यक्ति को प्रमुख प्रदेश के मुखिया के रूप में वहां पर जिम्मेवारी दी है। और मैं ये सारा का सारा श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले, जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए अपना जीवन लगाया और समाज को एक दिशा देने का काम किया, उसका ही परिणाम है। और उस परिणाम में समाज आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हुए जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी ने दी है। दूसरी बार हरियाणा के अंदर मुझे वहां पर आने का अवसर। Bharatiya Janata Party spokesperson Shehzad Poonawalla, on the other hand, has strongly criticized Congress leader Rahul Gandhi, accusing him of disrespecting the constitution and also undermining the constitutional institutions. Poonawalla has spoken after a delegation led by Union Minister Arjun Ram Meghwal and Bharatiya Janata Party MP Alur Singh visited the Election Commission, alleged that Gandhi's recent remarks, in which he questioned the integrity of the constitution and claimed it was quote-unquote in danger, were not only false but also created unnecessary confusion among the public. Despite being warned by the Election Commission, Gandhi, according to Poonawalla, continued to make such derogatory remarks. The Bharatiya Janata Party has now demanded that the Election Commission register a case against Rahul Gandhi and take strict action for his statements. विधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी पर सवाल उठाने वाले बयान देने का काम वो कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले भी चेताया है। अब हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि नोटिस से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बांटो और राज करो और वोट बैंक की राजनीति में लीन होकर आज राहुल गांधी लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का तो डेलीगेशन फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, चुनाव में उनको हार नजर आ रही है, तो किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर सवाल उठाए और किस प्रकार से अपने आप को पीड़ित दर्शाए, यही एक तरीके से वो आ रहा है। उनके डेलीगेशन का केवल फ्रस्ट्रेशन है। योगी जी एक साथ कर लो, मुझे जाना है। खड़गे जी एक साथ कर लो। The second session of the 16th Andhra Pradesh Legislative Assembly began today in Amravati. On the first day of the session, important legislative discussions are expected to take place, covering a range of issues that are critical to the state's development.
Now, this session is being closely watched as it will review the progress of key governmental projects and also address crucial matters affecting the people of Andhra Pradesh. The proceedings today set the tone for what is likely to be a significant period in the Assembly as the lawmakers now work on shaping the state's future direction. నీటిని సరఫరా చేయాలని మా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అన్ని పట్టణ ప్రాంతాలలో పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు అత్యవసర సేవలకు సేవా స్థాయి ప్రమాణాలను సాధించడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించబడ్డాయి. 5 ఏళ్లుగా కనుమరుగైన రాష్ట్ర కళల రాజధాని అమరావతి నేడు రూపుదిద్దుకుంటోంది. ప్రపంచ స్థాయిలోనే అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడులు మరియు ఉద్యోగాలకు ప్రపంచ స్థాయి గమ్యస్థానంగా అమరావతి మారబోతోంది. అత్యంత నివాసయోగ్యమైన, సమర్థవంతమైన మరియు సుస్థిరమైన హరిత నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దేందుకు మా ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు దోహదపడ్డాయి. రాజధాని నగరంలో మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేయడానికి మా ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా బహుళ పాక్షిక నిధుల సంస్థల నుండి 15,000 కోట్ల రూపాయల నిధులను పొందడం జరిగింది. పట్టణ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న నిరుపేదలకు సరసమైన ధరలకు ఆహారాన్ని అందించడంతో మా ప్రభుత్వం మొత్తం 123 పట్టణ ప్రాంతాల పరిధిలో 204 అన్నా క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా 158 అన్నా క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు 11,490 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను. గృహ నిర్మాణం 2029 నాటికి అందరూ ఇళ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలన్న మా ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది. ఆవాస్ యోజన Telangana Chief Minister Revanth Reddy has raised concerns about the political choices facing the public ahead of the upcoming elections. In a recent statement, he spoke about how some political leaders during the festivals such as Ramzan use the public sentiment to gain support, but he urged voters to think critically about their long-term decisions. The Chief Minister has framed the election as a choice between two political families, the Modi Parivar and the Gandhi Parivar, quote unquote. And he warned that if the people choose to support the Modi Parivar, it could lead to the scrapping of the 4% reservation for minorities that was implemented initially by the Congress party. And Revanth has asked the people of Telangana to carefully consider their support in the upcoming elections as their choice could have significant consequences for the state's overall policies. कोशिश किया हुआ है डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले। रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे भाई, वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे हैं। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इतना तो याद रखो। इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश
संविधान आरक्षण खतरा में है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदलने वाले हैं, मुसलमानों का खासकर आरक्षण रद्द करने वाले हैं। इस देश को तोड़कर दीवार बना के दो टुकड़ा करने के लिए, वो सरकार में बैठने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो। क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद महाराष्ट्र। बहुत सारे यहां बैठे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तेदार हैदराबाद महाराष्ट्र में है। आपके रिश्तेदारों को बोलो यहां से फोन करके, अगर हो सके तो 2-4 दिन चलो वहां पर, जाके वहां पर घर घर घूमो, सबसे मिलो। इस देश का ताकत हिंदू मुसलमान है। ये ताकत को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इस चुनाव में उन लोगों को हराना है, नहीं तो नुकसान अपने को पहुंचा देंगे। ये नुकसान ये देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुर्सी में, रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे भाई, वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी, छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इतना तो Well, that's a wrap on this prime time with me, Anukriti Sharma. In the meantime, keep watching CVR English for more news and updates.